ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ରୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଅନୁଭବ ଅର୍ଜନ କରିବା। କ୍ୟାପିଟାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଅବସର ଆଣିଛି, ଯାହା ଆମେ ଏହି ୱାର୍କସପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଜ୍ଞାନକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ଓ କରିପାରିବା। କ୍ୟାପିଟାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ସୁନାମଧନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଯାହା 2010 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶୁଭନାରାୟଣ ସାହୁ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ସାହୁ ଏବଂ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ସିଇସି ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ ଏଜୁକେଶନାଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଉଚ୍ଚ ମାନର ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ଆସୁଅଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି କ୍ୟାମ୍ପସ ଏକ ମନୋରମ ପରିବେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ସଡ଼କ, ରେଳ ଓ ବିମାନ ଯୋଗେ ଭଲ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ। AICTE ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ACT&BT ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ BPUT ରାଉରକେଲା ସହିତ ଅନୁବନ୍ଧିତ ଡିପ୍ଲୋମା, ବିଟେକ୍, MBA, MCA ଏବଂ ମାଇନିଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରି ଆସୁଅଛି। ଉତ୍କର୍ଷତା ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ 2010ରେ 240 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଆଜି 1530ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ପେସାଦାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାସ୍ପଦ ଅତିଥିଗଣ, ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ, ଶିକ୍ଷାବିଦଗଣ, ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଧ୍ୟାପିକାଗଣ, ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଓ ମୋ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୃନ୍ଦ, ଆଜିର ଏହି ଦିନଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଅବସର। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନବ ଜୀବନର ଜ୍ଞାନ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଅନୁଭୂତିର ଉପାର୍ଜନର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ। ଆମ ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ ପ୍ରିୟ ସିଇସି ତରଫରୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରୁଅଛି। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ସାର୍ଥକ କାରଣରୁ ଆଜିର ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ପ୍ରଫେସର ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର। ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଆମ ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରୁଛି। प्रोफेसर स्वयं प्रकाश मिश्र स्कूल ऑफ मेकानिकल इंजीनियरिंग प्रोफेसर किट यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर ओडिशा 2010-2016 प्रोफेसर रूपे कार्यदक्षता हासिल करि आसिछथि। He has received his doctoral of philosophy awarded from NIT Rourkela in 2016 January. He has 2 years of industrial experience and 7 years of teaching experience, including postdoctoral experience. His research includes artificial intelligence, rapid prototype, rapid manufacturing, and additive manufacturing. Includes heat transfer. He has published several research papers on some reputed journals and applied for patents also. Next, I would like to invite Professor Mantraprasad Satpathy. Professor Mantraprasad Satpathy, who is currently serving as a professor in School of Mechanical Engineering, KIT University, Bhubaneswar. He has 10 years of teaching and research experience. Professor has completed his doctoral of philosophy on ultrasonic possibility of crystalline metals in 2017 from NIT Rourkela, India. He has guided UG, PG and PhD research scholars who are working under him on various topics related to advanced manufacturing field. Professor Satpathy awarded from IEI India for his outstanding contribution in the journey field. He has published high quality of journals as well as 20 international conference proceedings.
He also acts as reviewer to many prestigious journals in the manufacturing field. His area of interest include solid state joining and characterization, development of hybrid joining process for fabrication of linear batteries, simulation and modeling of advanced manufacturing process. ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ପ୍ରଫେସର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଓଡ଼ିଶା। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ଏଚଓଡି ଅଫ୍ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଓଡ଼ିଶା। ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସଂଯୋଜକ ଆଜି ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ପ୍ରଫେସର ଆନନ୍ଦ କୁମାର ସାହୁ, ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଓଡ଼ିଶା। ସହ ସଂଯୋଜକ ପ୍ରଫେସର ବିଶ୍ୱଜିତ ନାୟକ, ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଓଡ଼ିଶା। ଦୟାକରି ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସରକାରୀ ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଜି ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନର ପରମ୍ପରା ଏକ ପାବନ ଆରମ୍ଭର ଚିହ୍ନ। ଏହି ଆଲୋକ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା, ଶିଳ୍ପ, ଗବେଷଣା ଓ ନୈତିକତାର ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର କରେ। ଅଜ୍ଞାନ, ଭୟ ଓ ନଶ୍ୱରତା ରୂପୀ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଜ୍ଞାନ, ଶାଶ୍ୱତ ଓ ସତ୍ୟବୋଧ ଜନିତ ଆଲୋକକୁ ଯିବା ଏହି ପବିତ୍ର ମନ୍ତ୍ରର ବାର୍ତ୍ତା। ଏହା ଆମକୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରୂପରେ ଜ୍ଞାନ, ପବିତ୍ରତା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ଆଲୋକିତ କରେ। ଏହି ଆଲୋକ ନିଜେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ଦୀପ ଜଳୁ, ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ୁ ଓ ଆଲୋକ ପ୍ରସାରିତ ହେଉ। धन्यवाद। शुभ अवसर। I would like to invite Principal Sir Professor Achyutananda Mishra to tell about our program. Very good morning and a grand welcome to all our dignitaries present over here. Specifically, Dr. Soy Vikas Mishra sir, जेबी के हमको बहुत कॉन्सर्न करे तांका कॉन्सेप्ट दे दिया संशोधन करे सेटा बहुत खुशी से हम राज्य एक्सपर्ट रिसोर्स पर्सन सेकेंड प्रोफेसर डॉक्टर मातृ प्रसाद सर बंतपर सॉरी मातृ प्रसाद सर से कॉन्सर्न करे ऐसे कि प्रेजेंट अछंती से हमर सेकेंड रिसोर्स पर्सन देखि आज
जो टॉपिक हमर अछि से टॉपिक ऊपर सेक्चुअली डेलिबरेट करिवे तबे जो डिग्निटरीज माने आछुछंती विभिन्न कॉलेज रो विभिन्न यूनिवर्सिटी रो विभिन्न अन्य अनुष्ठान रो से जो रैंक रो होते प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर समथिंग सेमान को बहुत धन्यवाद दउछु सेमान ताकर बहुत मूल्य समय दे कि हम पास आछंती हमर सेमिनार को सफल करे पे हमर सेमिनार के वाणी स्पॉन्सर्ड AICTE सेमिनार जो सेमिनार कैप्शन का शीर्षक होची vibrant advocacy for advancement of nurturing Indian languages. Topic होची additive manufacturing 3D printing from prototyping to production. एटा पानी स्पॉन्सर मु भी जानना थी लागो पानी NEP 2020 अपन सब जानते हैं संस्था एकेडमिक स्पेशलिस्ट रहे सो NEP रो ଗୋଟେ विजन होची जे हमर लोकल लैंग्वेज वर्नाकुलर मीडियम रे एजुकेशन को ट्रांसफर करिया पे जोड़ा कि बहुत दरकार बहुत खुशी जे हमर वर्नाकुलर पर लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करा होची फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड फॉर वोकेशनल एजुकेशन जोड़ा कि मु बहुत दिन आगो से जे सब एक्सपीरियंस मु एक्चुअली गेस करथुली ए जे सब आगो होबा दरकार था कारण मोर 30 वर्ष एक्सपीरियंस रे मु एज ए टीचर क्लासरूम रे परफॉर्म करे जो ओडिया मीडियम पिला आसते जो दूर अंचल आसते से माने एक इंग्लिश मीडियम में कंफर्टेबल होते नहीं एवं आवर ट्रूथ होची जोन टीचर है कि हमें भी हमर मीडियम जहा होना नहीं कि हम तो क्लासरूम में एक कांसेप्ट एक्सप्लेन करू हमर मातृभाषा रे कांसेप्ट एक्सप्लेन करले जते फ्लुएंसी जते एक्यूरेसी जते एक्चुअली बुद्धि पॉइंट हुए सेति की हो तो ने बाहर लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज माने अदर लैंग्वेज रे बहुत डिफिकल्ट मु निजे देखि छी एक्सपीरियंस को जो थे कि बहुत खुशी एनी पर ଗୋଟେ विजन रखा है आस्ते आस्ते लोकल लैंग्वेज रे जितनी के संभव एजुकेशन को धीरे धीरे कन्वर्ट करिया पे वो तो 100% पॉसिबल न होय दरकार भी नहीं गोटे सेमिनार में देखुली प्रोफेसर ओमप्रकाश हमर ओमकार महाविसर से कहतले जे जेतबे इंजीनियरिंग कथा आसुछ नॉलेज कथा आसुछ हम एक्सप्लोर करूचे लैंग्वेज हैज नो रोल टू प्ले नॉलेज का एक्सप्लोर हे गला परे नॉलेज को कम्युनिकेट करिया पे एक्सप्लेन करिया पे बट लैंग्वेज में सारण दिया जाय पारे तेणु ओडिया लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज से किसी बड़ कथा नहीं ऑफ कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज तो विंडो लैंग्वेज आम इंग्लिश लैंग्वेज रो महत्व बुझुछु पिला से बहुत अभी भी इंग्लिश मीडियम पढ़ौछु जो कथा होची जे इंग्लिश मीडियम पिला माने जति के आगे अछंती ओडिया मीडियम पिला माने बा अन्य वर्नाकुलर मीडियम पिला माने जति स्कोप क्रिएट करा जिवो ताको दी एजुकेट करा जिवो इंजीनियरिंग बही को जदि ओडिया लेखा जिवो इंजीनियरिंग एक्चुअली कांसेप्ट को जदि ओडिया रे हमें बुझेई दे पारिबा तले कोन से मीडियम में किछ गुरुत्व रहइबनी पिला माने इक्वली गुड इंजीनियर्स हेइ परिबे एग्जांपल्स गैदर बहुत एग्जांपल अछि जे ओडिया मीडियम हो को मीडियम हो पिला माने इंजीनियरिंग पे पैसे जे सिखे वो आगो को जाई परछथि सो इट्स वेलकम स्टेप को कहबे जो पानी बा ओडिया रे जिछटा को आनिबा ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟେପ୍ ୱେଲକମ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି NEP को AICTE को ଏବଂ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ ରେ ଏ ଯୋଜନା ହେଲା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ସେମିନାର ଆମର ଏଇଠି କ୍ୟାପିଟାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗ୍ରୋଥ ପାଥରେ ଅଛୁ ଆମେ 2010 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମର କିଛି ସ୍ପ୍ରେଡିଂ ଆୱାର ୱିକ୍ସ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ डिप्लोमा रो तापर डिग्री इंजीनियरिंग आरंभ होला छोटा ब्रांच रे MBA होला MCA होला पता धीरे धीरे ଆମେ आहुरी भी ग्रो करूछु हमर विजन होछि टू बिकम यूनिवर्सिटी as soon as possible एनीवे तापर आउट जिंस होछि ଆମେ जो फॉर द फर्स्ट टाइम ଗୋଟେ ओडिया रे सेमिनार आज आरंभ करूछु हमर ଗୋଟେ बाणी स्पॉन्सर प्रोग्राम ओडिया रे ଆମେ आज फर्स्ट ଗୋଟେ सेमिनार आरंभ करूछु एवं देखुछु जे ओडिया रे ଗୋଟେ सेमिनार कले ଗୋଟେ वर्कशॉप कले ଗୋଟେ टेक्निकल एजुकेशन रो जो वन से कॉन्सेप्ट गुडा बुझे केते सुविधा होची बा केते असुविधा होची ताको एक्सप्लोर करिया पे ଗୋଟେ एक्सपेरिमेंटेशन आज हम करूछु सेति लगी मु बहुत खुशी जे डॉक्टर सोहन विकास मिश्र सर एंड प्रोफेसर डॉक्टर एक्चुअली पत्र प्रसाद जी सर जो बाबा पद अछंती से माने या परे से टॉपिक को ओडिया रे जेते तो संभव बुझाइ पे ट्राई करी थैंक यू धन्यवाद सर नेक्स्ट I would like to invite Professor Prasanna Kumar Mahanta, HOD of Mechanical Engineering. जय जगन्नाथ
एक्चुअली सार जरा कहते AICTE अंडर पानी प्रोग्राम ओडिया गोटे वर्ष करने आगु बहुत आम सेमिनार करूँ वर्कसप करूँ नूतन जो शिक्षा नीति अनुसार लोकल भाषा को प्रचार करवा प्रसार करवा ता भर आम टेक्निकल एजुकेशन को केमती लोकों पाखक पहुँचाइबा बुझे पारे तो हे तो ये टपिकटा आपको 2 दिन भितर गोटे नुआ अनुभूति दे पारे ओडिया टे बेसी बुझीपारे तो ताकू आप कम्युनिकेट करेंगे तो हे तो आपको यहाँ नुआ अनुभूति आनी पारे आम डिपार्टमेंट एक्चुअली स्टार्ट होता से कॉलेज जब स्टार्ट होता 2010 में सर्टिफिकेट को आम आरंभ करते किंतु सेटा 2015 में पुणी 120 होगा सेमती आम डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट करूँ आम 2019 से षाठी सीट थी 2022 बेलू से 120 सीट होगा आम डिपार्टमेंटा हूँ सर आम कॉलेज गोटे बड़ डिपार्टमेंट आम मत खुशी लगे जहाँ भल प्रोफेसर सब अच्छा आम डिपार्टमेंट टैलेंटेड लोक सब भल भल एक्सपीरियंस सब अच्छी से गोटे अर्गानाइज कर ग्रोइंग स्टेज आम ग्रोथ करूँ तो ये गोटे सेमिनार आम कर डिपार्टमेंट बहुत बड़े पर्व विषय थैंक यू ये कही समस्त स्वागत जय जगन्नाथ Thank you, sir. Next, I would like to invite our keynote speaker, Professor Swayanvikas Mishra, to start our first session. University. I hope I'm audible without this mic. Is it required? Is it required? No, sir. So thank you, Professor Anand, for inviting me for this seminar. And this additive manufacturing, this is the noble research field and emerging technology that is going on. जोटा कि वर्तमान मार्केट रे बहुत जोर चलছে 3D प्रिंटिंग और से कांसेप्ट है कि नहीं कि प्रोटोटाइप तैयारी करथला एबे से मार्केट रे एंड यूज पार्ट्स जोटा कि हम डायरेक्ट यूज करि पारे से बडा पार्ट तैयारी करू ओके फर्स्ट रैपिड प्रोटोटाइपिंग वाज इन्वेंटेड इन 1986 so it was started by Stratasys, an American company, in 1986 and patented by them also. They have started with FDM and SLA printing. Okay. At that time, it was only used for designing prototypes. Only for modeling. Now, additive manufacturing has gone so far that you can use these printed parts, additive manufacturing 3D printed parts as a main components. You can replace everything, like from mechanical engineering, automobile engineering, aerospace engineering, your orthodontics, dental applications, and I can say that in construction line also. Some of my friends are also working in this construction line using 3D printing technology. I will show you something in my slides during that presentation. You will see how 3D printing process has gone so far, starting from prototype to manufacturing and productions. Okay. With that, we'll start. First of all, what is additive manufacturing? We have classified
this manufacturing process into three types. One is additive, previously it was subtractive and zero process, and third one is the additive. Subtractive, zero and additive. If the material is added, it is known as additive manufacturing. If the material is removed from the bulk of material, it is subtractive. If there is no removal of material, it is known as zero manufacturing process. Okay, some example of subtractive are like turning operations, grinding operations, spinning operations. Where you will subtract with the bulk of material, you have to remove the material to get a final part. But in additive, we have to add certain layers depending upon the part design to part to create a final part. This is additive manufacturing process. So my content should be like this. Additive technologies, applications, advantages. We will discuss one by one. So first line, this is 1D, single dimension 1D. I am showing in horizontal directions. It may be vertical also. So one dimension, two dimensional, three dimensional. You know it. So 3D printing is a layer by layer. In a sequential manner, we add layers or material layers over another to get a 3D printed parts. It is a 3D printing process. So what we need? What do we need to get a part 3D printed? First, there are two types of processes. If the material, if the design is existing, we can go with the design concept. If there is no design, we will go with the CAD modelings. You know CAD modelings like option SolidWorks, Prohi, Unigraphics, AutoCAD. Those are designing software. You just create the design, save in STL format, then import that model to 3D printing station, it will start printing. The model is existing. The model is replicate kariar achi. Jemti ki amra artifacts mandir ro murti achi. Kar ote mom ro putla kari kariar achi. Patient ro ote hada vangi hada ta kari kariar achi. Patient specific organs. In that case, what we will do? We will use 3D scanners. Being a mechanical engineer, we will use 3D scanner. Being a doctor, we will use MRI, CT scanner. Okay, MRI and computer tomography data and MRI data. So final is that we have to set the model in STL format, stereolithographic format, STL format. Once it is ready, we import that model to machine software or slicing software and everything. Slicing software, then it will set some process parameters there, then it will go to the printing options, then you will get the final part. Last, the final part. If it is plastic part, you can show it for prototypes. If it is a metal part, it can be used as a prosthetic parts. So I have classified this 2D printers and 3D printers. 2D printers we are using in the home. These are 2D printers. This is 3D printers for model build. Like you can bring your concept to prototypes. Bring your concept to virtual build. That is 3D printers. This is subtractive manufacturing. But chamos kari hochi gote katha basu. Subtract katha yeru ame chamos kari process. This is the subtractive manufacturing process where material is used. So the material bahar kari kati bete kochu. Here, turning operations. This is also subtractive manufacturing process. And this is 3D printing where material layers, material gote layer are layers in a sequential manner as defined by the machine software. So this is 3D printing. So 1984 it was started, patented by them. So these are the types of additive manufacturing processes like hat polymerizations, material extrusions, material jetting, binder jetting, powder bed fusion, direct energy deposition, and seed lamination. There are types of additive manufacturing processes, and it has been classified as several types: stereolithography, digital light processing. In this process, material is in the form of liquid. Material in liquid form and it starts solidifying. Solidifying ultraviolet ray, any type of light carbon potassium solidifying. This is matte polymerization and material extrusion. I mean, if you toothpaste use Colgate use extrusion principle toothpaste on that basis we are using material extrusion principle. This is ADDITIVE. Okay, next is material jetting. Material jetting, material will be thrown through these nozzles. Then powder bed fusion. But a powder bed fusion, laser light okay, जो भी laser light पड़ेगा सेटा print होगा, sintering होगा, the nearby particle will action. That is powder jet fusions. Then direct energy deposition. Here also we are using high
power energy source, that is the laser source. The sheet lamination is totally obscure, sheet laminations. So these are the 6 processes that has been adopted by these 3D processes right now. So nowadays it is going on in every aspect, like starting from prototype to medical applications, aerospace applications, automotive sectors. I will show you some slides on that. So these are the process parameters, some process parameters. If you are going to do some research on this additive manufacturing process, these are the controllable process parameters, like infill density, infill pattern, bhitar pattern that can be designable. That can be varied, print speed, kete speed re laser light chalibo, kete speed re materialization hobo, line direction empty set, apna head ta कोड सार मूव करिवो, एतले प्रिंटिंग चलছে आपण देखिबे प्रिंटर पोजीशन टा कोड रहबो, kete speed print होबो, kete speed re materialization होबो, से क्विक केते रहबो, सबुडा होछ कंट्रोलेबल प्रोसेस parameters. Scan speed, all these things, powder bed temperature, gas atmosphere, control environment, all these things are process parameters. This is one latest technology, FDM process. Fortunately, we are having this, I think, ender process. So material like ABS, PLA, nylon, PETG, TPU, these types of materials can be used in this FDM process, FDM machine. So in additive manufacturing, we deal with some certain defects while manufacturing, like porosity. Porosity is the main, sometimes advantage हुए, disadvantage भी हुए. Due to porosity, our weight कम जाए. Due to porosity, our strength हम बढ़ता है. Sometimes porosity जो हमारा weight कम जाए, हमारा benefits. Such are benefits. तो बात की slide पर से layer misalignment, delamination, surface roughness, infill issues. The other issues, like you can see under precision, some extra material are extruded, which is under and over extrusion. Streaming handprints, sometimes the thick, so thickness of fine effect, issues was due to accuracy, that happens to accuracy. The layer separate, this is a layer by layer manufacturing process. If you have layer attachment heated on see case rate delamination starts. Error. To avoid such errors, we are using some control environment. It goes and checks on the sources. You can see these outer surfaces. You can see. Heat cleaning post processing, polish painting, denting. Curling and drop corners. You can see these corners. These corners are not polished, not accurate. With weak infill. Infill होची भीतर जो पैटर्न नाम केवल डिजाइन हो इटा रेक्टेंगुलर अछि एतो सर्कुलर करि हबो एतो स्टार करि हबो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट केते वेट रखियो चाहते से अनुसार हम एतो चेंज करसु आ इटा सब बेले तार स्ट्रेंथ को वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो को कम हो gaps between infill and outfill this gaps you can see this area layer sheet. So now additive manufacturing has taken in all fields like tissue engineering, biomedical applications, medical, PCB design, mechanical, clothing, aerospace, tooling, ports, in all sectors you can see is the footfalls of additive manufacturing in all sectors. Like in healthcare and innovation to 3D printings, these parts are 3D printed and they are patient specific. All these are patient specific. Mo atar anguti apna atar anguti saman hoba nahi. एमिति जो मास प्रोडक्शन करते हैं मास प्रोडक्शन करे तो अपन डाई दरकार तो मु पेशेंट रे कम करके स्कैनिंग कर देबी हाथ जति पोर्शन मिसिंग अछि राइट एंड लेफ्ट हैंड स्कैन करबी जति पोर्शन मिसिंग अछि तब 3D प्रिंटिंग दैट इज आल्सो बायोकम्पैटिबल बॉडी से तो ह्यूमन बॉडी से कोनसी रिएक्शन नहीं ओके these are the finger prosthesis and you can see this is prosthetic limbs this level prosthesis. So orthopedic applications is like that. Knee joints are also there. So these are some pictures I have printed. We have printed. In the department also they are having this one prosthetic limbs. And antibacterial respiratory strips. You know these plastics are normally they are printed with ABS, but we mixed ABS with silver
and copper. So material हम पीरियड डेवलप करछु प्लास्टिक से आप नॉर्मल मार्केट में पाइबे PLA पॉलीलैक्टिक एसिड पॉलीकार्बोनेट ABS प्लास्टिक जोटा एक्रिलो न्यूट्रल रिफरेंस स्टाइल एटा हम मार्केट में पाइबे कि आमे ताको को करछु जोटा एंटीबैक्टीरियल मटेरियल जोटा हम PLA सहित कॉपर मिसौछु PLA सहित सिल्वर मिसौछु जे मटेरियल डेवलप करछु ताको नेकी 3D प्रिंटिंग करछु so that is completely antibacterial. So these parts, these materials are developed in our lab and we are also using this material to print some antibacterial parts. And in surgical planning, you can see this we were making the in portion that are coming cardiology. So before going for the main surgery, people are these doctors prefer to go for a trial surgery. So trial surgery करेगा केमते होची ता आपण स्कॅन करबो ना एक पोर्शन स्कॅन करबो एक पोर्शन स्कैन करेंगे केती पोर्शन काटिबार अछि टोटल पोर्शन 30% आउट करके तो प्रैक्टिस करबे ट्रायल लेबे देन गो द मेन देन दिस इज द 3D स्कैनिंग ऑब्जेक्ट स्कैनिंग फोटोस so 3D printing in medical in Israel they have produced a 3D printed kidney using bioprinters living cell even the cell practice में 3D printing करछो now market is like that grow your own organ निज organ निजे तैयारी करो मो किडनी खराब होइछि मो किडनी रा सेम सेम रहया कथा आपण मन रहइबो मोर जति पोर्शन रे किडनी रहया कथा मो सेति के देखो स्कैन करली 3D printing करली सेटा scientific सर grow your own organ is the first line by this 3D printers associations bioprinters cell to print living cell they are using for fabricating this heart and kidneys. The process is now people are using these 3D printed parts. आगुर कोन ना काठो हम यूज करते wood यूज करते so now they are using ABS like antibacterial blended with this silver and copper. In dentist applications आपण ଗୋଟେ डेंटिस्ट पाक जिबे मो दांत एटा भांगी से आपण को ଗୋଟେ चुनम दो पेंटी ଗୋଟେ चुनम दबो आपण चुन करिवे सेतिरे जो गुडे शेप रो ग्रेप आसबे ग्रेविंग एसको से जानिबो आपण दांत ए पोर्शनटा ए भला मिसिंग होछ ताकू से पठेबो से पुन ताकू कास्टिंग करी माटी पठेबो तापर आपण अटैच करियो किंतु 3D प्रिंटिंग प्रोसेस आमे कोन करू सीधा 3D स्कैनर यूज करबा जोडा डॉक्टर एक्सरे करते से छोटो मशीन अछि स्कैनिंग कर दबा हम दांतटा को ओले शेप हबार अछि मटेरियल हम टाइटेनियम यूज नॉर्मली टाइटेनियम यूज हुए जोटा कि ह्यूमन बॉडी कंपैटिबल तो टाइटेनियम ले आपण 15 मिनट 20 मिनट 3D प्रिंटिंग टिप तयारी करे ताको अटैच करो तो पेशेंट स्पेसिफिक ऑर्गन कैन बी एटा आपण टाइम सेव होछि लाइट वेट रहउछि आ लॉन्ग रन भी जाय so these are the applications in dentistry the printing of kidney you can also do these things all these things are biomedical cells living cells also bionic killers. So this is one thing that absorbs shocks. Direct shock can absorb and it can react gently. So these are developed by this hypoelastic bone. This part are used in bone when increasing bone marrow this hypoelastic bone. So bone can grow through this one also. Bone can grow through this one. Cells can grow through this one. It has no impact on human body and it was developed by this Macromics School of Engineering. They have developed this for this orthopedic implants. And in defense applications, they are just printing our 3D printed parts for demo purpose. They are 3D printed tanks for demo purpose. They are the vehicles. And on the scale model for INAGURATION in Hyderabad, they have used 3D printed laser engraving for this 3D printed home IT parts. Recently, they have developed this 3D printed. These are actually developed for this architecture field. आपण आर्किटेक्चर पास कुछ भी से आपण लोग ड्राइंग कर दो लाइक आपण कांसेप्ट यदि मैकेनिकल इंजीनियर सिविल इंजीनियर छोटा आपण आउ की स्टडी में आपण ड्राइंग बुझी परिबे बट लेमैन का आपण फिगर का धरे देबे से बुझी जितो मोर बेडरूम कोड रहबो मोर डाइनिंग कोड रहबो किचन कोड रहबो तो এই জিনিসটা ପାଇଁ ଆଗରୁ କଣ ଥିଲା ପେପର କାଟିଂ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ପେପର କାର୍ଡବୋର୍ଡ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ଲାଇଉଡ୍ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ କଣ ଆପଣ ଡିଜାଇନ ତିଆରି କରିଦେଲେ
ताको मशीन में इंपोर्ट कर देले 3D प्रिंटिंग दिला स्टेप बाय स्टेप तते बेला आपण एटू भी आपण घर छात खोली देख परबे मो बाथरूम ला चेंजेस तो एटा फटा अछि ये देख हां डिजाइन चेंजेस सेकंड लेयर थर्ड लेयर फोर्थ लेयर सब का आपण अलग अलग लेयर अटैच कर देख परबे then you have to do for this architectural details. This is a crystal table printed in DLP 3D printers, one type of direct laser printing options. They have developed this 3D printing process to develop this architectural model. ଯେତିକିଟା କୁମ୍ଭ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେତିକିଟା କୁମ୍ଭ ସେଠି ତିଆରି ହେଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଫିଗରଟାକୁ ସ୍କାନ୍ କରି ସେ ଡେଭଲପ୍ କରିଛନ୍ତି ନା କାର୍ଡ ବନେଇ This is the model. Now, हमें जो जूता यूज करते हैं स्नीकर्स यूज करते हैं तो सर एक कॉमन डिजाइन है 12 नंबर 10 नंबर 9 नंबर तार सोल डिजाइन में अपन चेंज कर देंगे एलन को स्टार्ट करते हैं जिला एक कंपनी आरंभ करछि से अपन निजर गोडर स्कैन करी पठबे अपन फुटप्रिंट टा केमिति रहउछि सेही अनुसार अपन जूता भीतर प्रिंट हो सब बेले अपन जो पेन पाउछ दिगे डायबिटिक पीपल हो जो बड़ा पेन पाउछ ताको आराम से अपन समस्त को फुटप्रिंट टा इक्वली स्पेस भी न था कारण ये पोर्शन बेसी फिट करे मटेरियल ये तो सॉइल को कारेटा सेम आपण आपण को हिसाब जूता सोल चेंज कर देबे तो दिस इज टोटली डेवलप्ड बाय एलन मस्क न्यू कंपनी so advantage that custom printed same of the field according to your position you can change it use 3D lattice constructions so that it can absorb more shock and durable also breathable like air can pass through this one washable because it is completely plastic and rubber and odor resistance no odor is coming out of this and 100% recyclable and factory in factory hoboni je घरे बसी प्रिंटिंग करू तो ସେମାନେ ଗୋଟେ ଫାର୍ମ ରଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ 3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଅଛି ଆପଣ ଆପଣ ଜୋତାର ସ୍ପେସିଫିକ ଡିଜାଇନ ସ୍କୁଲ ସ୍କାନ କରିକି ଆମେ ପଠେଇ ଦେଲେ ସେ ଡିଜାଇନ କରିକି ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ପଠେଇ ଦେବେ so this is completely one new advantage new technology that is going to be in near future this is the thing देखो कार को पर्सन हिट होଉଛି रेड मान को अधिक स्ट्रेस पॉइंट आपण गाडी के रेड पर्सन अधिक स्ट्रेस ग्रीन पर्सन होଉଛି लो स्ट्रेस पॉइंट मोर 8 पॉइंट रे अधिक हिट होଉଛି तो मोर 16 टा 8% रे बेसिक क्वेश्चन इफेक्ट आसे दरकार आपणी से डिजाइन करबे आपन को होम डिलीवरी करबे 3D printed insole for diabetic patients also this one also you can see the cushion effect this is more cushionable than rubber को अधिक cushion effect दोछ प्लास्टिक ये भी करते जब आराम से आजम दोछ structure is like this air can be ventilate past this one very lightweight and showing more cushion then heart problem जो one does previously it was costing around 1.2 lakhs in 2012 one stent was costing 1.2 lakhs to 80,000 now it is costing 30,000 but when we are adopting 3D printing process for this stents हम कौन ने हार्ट स्टेट लगी से स्टेट गोटा का बटन 30,000 का मार्केट में इधर मार्केट में 3D प्रिंटिंग मसला थोड़ा गोटा का उधर 12,000 15,000 मिल 50% reduce बीजेपी गवर्नमेंट आसला पर एटा सब बच्चे 30,000 previously it was 80,000 to 90,000 more than that बटन से 15,000 का मार्केट में this is the impact of stent से जो जाई बॉल बड़ा आसे जाली का सेट रह जाए तो ब्लड फ्लो ठीक रहा पे स्टेट यूज करो so it has reduced the cost drastically clear the steps dental crowns you can see this the knee joint you can see this effect this part is 3D printed you can see how this is breathing this is metal 3D printed in the breathe coach देखो तो so low छाड़ो tensile socket tensile and compressive process रे in the breathe coach again grow करो sorry सिंपल सब दिया है कोना दिया है पूरा जाली वाला होता है ये पोर्शन का टोटल मीटर 8 this portion total meter
Thank you. Now, 3D printing process in food industry. It already a market article already. आपण जानते हैं अपना फोटो टाको केक ऊपर प्रिंट करना चाहते हैं. चॉकलेट आपण को इच्छा अनुसार डिजाइन करना चाहते हैं. कस्टमाइज करना चाहते हैं. एपटे मो फोटो सेपटे छुआ फोटो सेपटे आलगा फोटो गॉड गॉडेस फोटो आपण जेमिति चाहिए से वाला 3D प्रिंटिंग प्रोसेस रे यूज कर परिबे. चॉकलेट केक कर परिबे, केक डिजाइन कर परिबे. And now people are using 3D printing process. Mutton, beef, that one 3D printing process use for it. You can see this is the 3D printed chocolates. You can see 3D printed meat. हमें मटन पहले तो अंदर हाथ में पड़े हुए but they are using 3D printing process to design this meat. You can Google it also. KFC. In Russia, they have adopted this bioprinting farm. They have designed this 3D printed chicken nuggets. So in automobile sector, conceptual design plays a vital role. गोटे जिनस मार्केट रे से अडॉप्ट हो गोटे conceptual design कर गोटे concept कार मार्केट कर जोटा कि लोक अडॉप्ट करिवे हां एक्सेप्ट करिवे जेते हमर थॉर हो कि बोलेरो हो जे कोनसी गाड़ी मार्केट रे 2-3 वर्ष पूरा से ऑटो एक्सपीरियंस डिस्प्ले लोक केते एक्सेप्ट करछन गाड़ी तापर मार्केट जाय मैन्युफैक्चरिंग वर्ष पर मैन्युफैक्चरिंग रे मार्केट को आसे तो ता पूरा अपन ऑटो एक्सपो जोटा दिल्ली रे भया ऑटो एक्सपो सेठी आसे तो सेठी जो conceptual कार आसे तो नॉर्मली जोटा 3D प्रिंटिंग कंपनी कोन डाई कोनी के लोगो के जिनस मे भी मार्केट रे अडॉप्ट होई पारे नहीं पारे तो बर्तन समान कोन होचुंदी कंसेप्चुअल डिजाइन में 3D प्रिंटिंग प्रोसेस यूज करछन आगुर करूथिले पूरा डाई करके से बने डिजाइन करते चेंज करते लोग मॉडिफिकेशन से मॉडिफिकेशन होतला कि लेबे से टोटल यूज करछन 3D प्रिंटिंग प्रोसेस तो डबल प्लास्टिक्स तो डबल मेटल्स और ये टोटल असेंबली करछन ये 3D प्रिंटेड कार्स small cars. Except this tire and all electrical equipments, this total outer section is 3D printed. Chair में सब उधर 3D printing. 3D printed caps, small caps, 3D printed caps. Normally these are battery operated cars. This is also 3D printed racing car. It took around 12 weeks to print it and install all these electrical equipments. This is electric car. This is electric bike. Electric bike that is e-motorcycle. Battery को कैसे चलना कौन सा concept design देश के रच तो जो develop by 3D printer process FDM used to produce model. Then 3D printing in constructions. And it was limited to architecture people, but now people are designing their concept and doing. And market to things are designed to do but we are direct use करके 3D printing के घर के लिए You can see this staircase. This staircase का total 3D printing process के लिए This bridge was 3D printing. This tile scale it was 3D printing. 3D printing process was started in Singapore 2014-15. They have started with their own design class. Now it has adopted by Saudi Arabia. India also doing all these things. Few days ago, I'll show you. This is a 3D printed house. It's post office developed by L&D in India. First 3D printed post office like L&D का है 2020 में post office. So how this process works? Just get a 3D printer here. It will start printing. 3D printing came, coffee bar, all these things are 3D printed right now. It will take 2 to 3 days, maximum 2 to 3 days to print a coffee bar. This is the process. You can see the internal structures. No need of any depth course. छोड़ा दरकार नहीं. Concrete, बाली, cement और मोटे specific भाग करेंगे ताकि समाने ये बोल. No reinforcement.
was first adopted in Dubai, first largest 3D printed building. सबको बड़ा total part was 3D printed. Total part 3D printing ହେଇଥିଲା କାଚ ଲାଗିଲା ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଲାଗିଲା ତ କନସେପ୍ଟ କୋନ ମାନେ ଆଉଟର ୱାଲ୍ ଆଉ ଇନର ୱାଲ୍ ଭିତରେ ସ୍ପେସିଫିକ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ କାଟିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ୱାୟାର ସବୁ ତାର ଭିତରେ ଯିବ ଆପଣଙ୍କ କଣା କରିକି ବାନ୍ଧିବାର ଅଛି और स्पेसिफिक तार भिडिकी तार तो एरिया काटिबार नहीं या भीतर आपण पाइप नहीं करिके दरकार पले ये को आपण एयर वेंटिलेशन कर देले आपण भीतर टेंपरेचर बाहर टेंपरेचर पूरा डिफरेंस आसीबो आपण एसी रा पावर कंजम्पशन बेसी दरकार नहीं सब दृष्टि ये गोटा बेनिफिशियल लेगाडी तो एटा 3D printed home in Dubai India post office world first 3D printed temple city fate simple portion total part of 3D printed. So 3D printed modular site because the outer security box was 3D printed. VAANI is the company that is working in India for this 3D printing. AICTE also doing these things. 3D printing momento by Devasta. Total part of 3D printing. Total parts. Metallic parts. So how from recycled plastic? US में startup आजो. तो आजो एक कंपनी जितना सब waste plastic, recyclable plastic ताकू यूज करेगी. ये बड़ा सब 3D printed होम देखो. चाइना तो यहाँ पर लगा है. During COVID, I will show some slide on that. During COVID, जितना isolation box दरकार पड़ता है, हम सब hospital में रहते हैं. चाइना छोटे छोटे सब बॉक्स तैयारी करता 10 फुट रे 12 फुट 10 फुट रे 5 फुट से रूम तैयारी करता जा भीतर टॉयलेट थिला आ बेड थिला गोटे पेशेंट पई गोटे रूम अटैच आ भीतर लाइट अछि ता भीतर फैन अछि ता भीतर पानी कनेक्शन एंड सो सम बॉक्सेस इट विल टेक अराउंड 2 hours to print a 3D printing home. These are the box tops by Godrej. VAANI and Godrej, they are working in partnership designing this box top 3D printed home. Then on cycle, that was 3D printed. Total frame was 3D printed. So frame division cycle of frame that 3D printed. Printed tires was not adopted due to conceptual your design. 3D printed tires. The tire में भीतर portion पूरा है. Total है for printing purpose. Outer section for more stiffness. I'll show some video for that. For you can see how it absorbs the shock. So tire wastage कम extra material में एयर गैप रखु तब सफिशिएंट से absorb कर करला और स्ट्रेंथ बड़ हो तो टायर पंक्चर रो यही मतलब कांसेप्ट ही मतलब 3D printed टायर्स फॉर प्लेस सर ये न्यूमेरिक स्कोप तो है फास्ट एंड इधर है अपन रे पंक्चर्स ना होली जो टायर मार्केट लॉन्च होची हमें बहुत दिन से पैरामीटर टायर प्रिंटिंग में लो जिन कोड मटेरियल यूज करछे तार वेट केते होची से केते फ्रिक्शन सस्टेन करि पालो केते टेम्परेचर सस्टेन करि पालो यार 3D टेम्परेचर होगा ये सस्टेन करि पालो बेसिक टेम्परेचर स्पीड बेसिक स्पीड सीरीज वाला कांसेप्चुअल डिजाइनिंग मार्केट फिर जो ये किधर आप यूज करके आप लोग डेजर्ट में ये पोस्ट आप आराम से रिजल्ट वाला काम करेंगे एक पोस्ट होगा कि आउटर सेक्शन कॉम्बिनेशन तो डेजर्ट में डाल दे शॉर्ट डिस्टेंस और डिफरेंट डायरेक्टर so you can see this is a small design as this part of 3D printed this portion is missing to be accident এটা কোনটা accident রে মিসিং হলা ডক্টর সেই পোর্শনটা ডিজাইন করছে সেটা কো ট্রায়াল সার্জারি মানে একটা পার্ট তৈরি করবে এই পার্টটা নেকি আমি কাস্টিং করব দিস পোর্শন উইল অ্যাক্ট অ্যাজ এ প্যাটার্ন ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଭଳିଆ କାମ କରିବ ତାକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରିକି ଆମେ କାଷ୍ଟିଂ କରିପାରିବା ପେସେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଭଳି ଦରକାର ସେତିକି ପୋର୍ସନ ଆମେ କାଷ୍ଟିଂ କରିବା ପେସେଣ୍ଟର ସେଟା କାଟିଂ କରିବା ଏଇଟା ପ୍ୟାଟର୍ନ ସେ ପୋର୍ସନ ଦେବେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିବା this is the process and can you suggest me some
process like we can design and we can build some type of things. And the process of you to apply it everywhere. Casting with the horn. Any process? Any insert? No. Most mechanical process nine of the only in 3D. So you can see this is design of a corn. So in agriculture and hydroponics, people are using this type of design for plantation. Gora with the gotcha laga hai, evada so use करते हैं सेटिंग्स हो. evada so stand use करते हैं जब आसिक आप Amazon में पाइप से evada सेटिंग्स हो. and agro लोहा असला steel rod का डोकर नेवे सोड़ा सो प्लास्टिक है से durable, lightweight, long lasting. Even all person design also pretty process. Most hostile market long lasting durable parts of it. See, this is the banco design. So important to get materials की सवारी इधर गच्चा लोगों को. बहुत प्रकार materials की लोगों को सवारी. गौरव सर डिजाइन सो. One room is also clear full of various. Requirement also. Customer requirement also ना हमारा design को sense को solve. 3D printing in rocket engine by sky to aerospace. So आगे कौन होता है? Total part anything ना. इट हमें welding को split करके एक वाला welding होगा, एक वाला welding होगा, एक वाला welding होगा. Welding है तो master custom city. तो welding जो क्या होगा? Side stress वाला generate हुए. तो ये सुन. but one more residual stress generate हुए. during welding process. but white space as well, then black spot as well. तो ये क्या stress generate होगा. See कि जो आवर में रहते हैं, हमें total part का ताकि casting होगा. Casting रहते हैं. Casting में दो defects असला, बहुत special असला. Now this total parts of 3D printed. The part of the total 3D printing. Elon Musk company direct a part of 3D printing. इतने cost minimize करते हैं. दूसरे का wastage of zero. Almost zero. और ये थोड़ा को बहुत calculation handle करते हैं. अगर quality assurance चलता है, कौन सी जगह कितने भी fault पाए हैं, बहुत ना 15,000 टोटल investment उड़ा के तो से ताको तुरंत ये कर देते हैं. अपना देखिए आल ले सुना बड़ा है. तो छोटे-छोटे ब्लेड कैरी होती है, इंजन केसिंग कैरी होती है. छोटे-छोटे मिस्टेक्स आर पाइले इज इट. अपना कास्टिंग सेक्शन में देखिए कास्टिंग होती है. तो 10 to 12 सॉमेटा कैरी होती है. 12-13टा मात्र ब्लेड पास होती है. क्लियरेंस होती ना एक ब्लेड लागी बैठो. बाकी तो वेस्ट. सो ये थोड़ा हमें कैरी होती है क्रेडिबिलिटी. तो कास्टिंग में से भीतर जो छोटे-छोटे एरिया है से ब्लॉक है. इतने बड़ा बाय डिफॉल्ट हमें ता भीतर पोरोसिटी ପାଇଁ एयर वेंट रख परिवा जो है डिजाइन से मतलब तबरा वेंट करके डिजाइन करते हैं. दिस पोर्शन इज टोटल 3D printing. तो ये जो रॉकेट और ये वाला को सब 3D printing प्रोसेस से नीचे. तो इंडिया फर्स्ट टाइम वी आर यूजिंग दिस 3D printed rocket engine 3D printing process. अपनी को सक्सेसफुल लॉन्च अपनी मार्क विद सेमी cryogenic liquid engine. This is 3D printing. 3D printed rocket engine. First in India that Agapala. Previously was adopted by all over the country. अब हमारे ये जो गूगल पर देख पर सेवन में से लॉन्च की रॉकेट इंजन 3D printed SpaceX directly use होती है EOS 3D printing. It's a metal 3D printer. EOS 3D printer is a metal 3D printer. Total printing process का उसे total metal रखते हैं. ये वाला सब यूज करते हैं. Total engine casing to engine सब लोग पार्ट 3D printed. SpaceX company. Printed by the Elon Musk. Super Draco Inconel is a rocket chamber. Digital cooling jacket emerges from USA. So the US का कैसे काम करते हैं? Status is labeless process. Direct metal laser sensor, also known as DMLS, is an additive manufacturing technology that creates metal parts directly from 3D CAD data without the need for tooling. DMLS utilizes a variety of metal and alloy materials, such as stainless steel, cobalt chrome, and ink, to create strong, durable parts and prototypes. DMLS इतने metal powder जो है उसका powder option है. इसमें metal का powder option है. जहाँ पर laser पूछता है, तब तक sinter एक में लगेगा. begins in the same fashion as other later additive manufacturing technologies. The program takes 3D CAD data and mathematically
transferred to TMLS equipment. A recoater assembly pushes powdered metal materials to the power supply, creating a uniform layer over the base plate. The laser then draws into each cross-section of the surface of the build material, heating and fusing the material. Once a single layer is complete, the base plate is lowered just enough to make room for the next layer. More material is raised from the cartridge and recoated. TMLS machine is to secure layer upon layer, building from the bottom up. As the part is built, support structures are added to give supplemental strength, fine features, and overhanging surfaces. The completed part is then removed from the base plate and treated with an HRBP process to further harden the part. Any support structures are also removed at this time. Numerous surface treatment and polishing options available. TMLS parts can be used in cosmetic applications. Typical uses for TMLS include tools and manufacturing aids, small integrated structures, dental components, surgical implants, and aerospace parts. The Boeing injector previously was used carbon phase का casting operation में तो ये process में total 3D printing process से use करती है तो प्रति Boeing को 3D printed foil injector supply होती है the Orbex largest single piece rocket total rocket का integrated single piece अगर assembly होता है total part the rocket का integrated total 3D printed excellent 800 selective laser center तो process आप देख लें selective laser printing operations. So ये process में total rocket और engine देखो उसे single component से print होती है. तो इस बात में पता लो उसको. और वैसे बनी देखो तो अपना अलग मकसद नहीं कोई कुछ नहीं. Then application of 3D printing in jewelry, art and craft design. आगुलो अपन को सुना तो करूँ जाओ तो मुदी देखते थे. जो बड़े मुदी available होती है ताकि मीडिया को बोलते. गोटे कस्टमर थी मोर मुदी गोटे ड्रागन दरकार ये गोटे हाथी बसो ये गोटे चढ़ई बसो ये गोटे डायमंड एपट लगे एपट देवी एपट लगे तो सुना कह ना आम कर बड़े कह से आईपर जमी डाई अच्छी सेमती आम बन पार जोटा आप बहुत बड़ा ड्रबैक्स था जो गुड़ा सुना दरकार जो डाई था से गुड़ा तैयारी करते आम कौन कर ना आम कस्टमाइज हवा दरकार मोर ना ये रधा ना मो मिसेस ना अधा रो छुआ नाटा ऊपर कस्टमाइज करेगा कस्टमर कस्टमाइज पार्ट्स बस आप कौन करेंगे से गोटे हम गोटे तार डिजाइन इंजीनियर थी तार कपड़ा बसले जाए जो गोटे डिजाइन दरकार तार डिजाइन तैयारी करदेवे डिजाइन अप्रूव हो गला देन सेव द मॉडल इन द फॉर्म ऑफ स्टील द स्टील फॉर्मेट में सेव करदेवे ये प्रोसेस में टीएल डायरेक्ट लेजर प्रिंटिंग ऑप्शंस ये प्रोसेस रे से आपन गोटे प्रोटोटाइप रे धरदो सर एटा आपन प्रोटोटाइप जोड़ा डिजाइन करते एटा प्रोटोटाइप केते कॉस्ट ना 100 मैक्सिमम 100 अपन अप्रूव कले तो अप्रूव देन गो फॉर प्रिंटिंग सेही पार्ट हम नहीं से कास्टिंग कर दे अपन देखो ये बड़ा पार्ट से अपन तैयारी करले कास्टिंग पार्ट रे दिस कास्टिंग रे सेटा नेगी मोल्ड तैयारी कर दे ताको नेगी मोल्ड तैयारी करले अपन सैंड मोल्ड तैयारी कर देले ओके देला कास्टिंग पार्ट पर ऐसा आइदर सेकंड ऑप्शन करो ये अपन पर पड़ गला अपन डिजाइन अप्रूव कर देले यार अपन डायरेक्ट मोल्ड तैयारी करियो 3D printing option. 3D printing option है डायरेक्ट मोल्ड तैयारी करियो. If it is going for a long run, दरकार नहीं एटा को यूज करो एज ए पैटर्न सैंड कास्टिंग यूज करते बात करते हैं. उन्हें सैंड ब्रेक करते अपन अपन पार्ट पाई गले. कस्टमर सैटिस्फाई अपन सैटिस्फाई. हमरा डाई दरकार नहीं. ठीक है जेमिदा डिजाइन तक हम बार-बार करते हैं. ना 3D printing होला करे क्रिएटिव प्रोसेस ऐसे तापर कास्टिंग नहीं पड़े सर बहुत ज्वेलरी करंट में जाके कलर वाला करंट बहुत क्लियर डिजाइन होगा in textile beauty fashion people are adopting different type of style and all is a style Jimmy the design and China can say textures that can be 3D printed.
in movie টা মনে আছে visual continue Showtime. We were mothers wearing her shoulder piece, which I call her mantle. We printed this through the process of 3D printing. I designed it to have the look of. it is a long run use of technology also same processes are direct 3D printing additive manufacturing FDM technology use करके total section of 3D the crown around the total dress of 3D Showtime. We were mothers wearing her shoulder piece, which I call her mantle. now Apple 3D printed watch housing watch from housing का total 3D costly watch so तारा outer casing का को तो बस different material use करती these are 3D printed housing watch first in I think it is Himachal Pradesh or Andhra Pradesh they have adopted this 3D printing process by L&T they have printed their school 3D printed school first time in India the school has 3D printed it took around 2 days 19 hours 2 days to establish this 3D printed house and these are these solar panels are already installed in this school do you think this school ready solar panel installed in this school ready NASA also adopting this 3D printing process in all aspects, designing their home and then undertaking some competitions to develop 3D printed homes. With this INAGURATION system technologies, we are adopting small designs. Like after the board, we have a cost of avoiding see post product also 3D printing also use. 1.8 very small tiny ones. Pencil marks which are also 3D printed. So how 3D printing आपका concept design में नहीं 3D printing में mass production 30 customer customized parts का select जिनके part customer patient specific organs customer customized parts जिनके part अपन दरकार market में order product सेवा दिलता starting from orthopedic, dental applications, aerospace applications, medical applications, and aerospace applications in jewelry sector, in food industry, I mean, let's say, fashion technology, everywhere it has given its footprints. So putting a footprints okay, so that सब line में already adopted. This is ventilator design. This process is pretty limited. Small cases, these are pretty limited. And these are also FDR. I was talking about these things. Isolation wards. Then loss है दो तीन छोटे बॉक्स जोटा कि गोटे बॉक्स देखने तो नहीं होना लगता 3D printed isolation box पर कोविड पेशेंट तो हम से कोविड पार्ट को फेल कर छोटे पार्ट्स को फेल कर कंप्लीट पार्ट sometimes not exactly concrete concrete आवर पार्ट पीस होता है तो केल में छोटा isolation box तो वो लोगों सोया पे सबसे तीन इनपुट रे हॉस्पिटल टॉयलेट आफ्टर ventilation everything they have maintenance छोटा कवर दरवाजा लगेगा तो फिक्स कर स्कूल है तो बॉक्स टोटल बॉक्स was 2 hours वो जगह मैन्युफैक्चरिंग करो वो जगह पे सिर्फ स्टैकिंग होती है सॉरी so introduction to 4D technologies now 1D 2D 3D and now it is available 4D 4 axis inclined planes also can be printed this is 4D technologies so 4D automatic parts if some non-linear parts are there we can use printing process there so कहाँ 4D use होती airbags seatbelts prototyping tires electronic equipments car interiors dashboard design तो पार्ट है ना सेटा इनलाइन नहीं अछि ये कोर मिलिंग नहीं अछि सेही प्रोसेस से 3D प्रिंटिंग प्रोसेस से हम 4D टेक्नोलॉजी यूज करी करछ 4D रे कोन होय आपण नॉर्मली 3D प्रिंटेड वेट तळु इन कोन मूव करे
एक्सट्रूडर ऊपर आसो आइदर लेजर सोर्स है ऊपर से मूव करो फोल्डेड विल बेड टा भी आपण मूव करियो बेड टा मूव करियो सो दैट ये मूव को तो से मूव को तो एनी टाइम मेटल इमोशन चले कॉर्नर में कुछ आपण गाड़ी डैशबोर्ड डिजाइन दा कि सेटा एमती ही से सिंपल आपण तो बेड टा टिके इंक्लाइन करियो बहुत प्रकार में हाइड्रोजन यूज करे थर्मोप्लास्टिक्स थोड़ा यूज करे फोटो रेस्पॉन्डिव यूज करे मैग्नेटो रेस्पॉन्सिव यूज करे तो बहुत प्रकार मटेरियल में बहुत यूज है लगी द नेक्स्ट कॉम्प्लेक्शंस हाइब्रिड प्रिंटिंग मार्केट 3D 4D and hybrid this is combination of both software active additive then cumulative neural networks is a research topic sura cumulative neural networks एथिरे कोन हुए हमें एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे सब प्रोसेस अछि सबके टिके फॉल्स है एरर है ताको फाइंडिंग करियो प्ले कंप्यूटर सेंसर ट्रेन करियो न्यूरल नेटवर्क यूज करी से ताको डिफेक्ट डिटेक्शन करियो प्रोसेस मॉनिटरिंग करियो प्रिंट पैरामीटर को ऑप्टिमाइज ऑटो ऑप्टिमाइजेशन हमको ऑप्टिमाइजेशन करे दरकार एल्गोरिथम यूज करे दरकार हमें न्यूरल नेटवर्क से ताको लिंक करे दर तार जो प्रॉब्लम होला ताको से फॉल्स डिटेक्शन करियो एरर डिटेक्शन करियो या प्रोग्राम काम चलछि टोपोलॉजिकल ऑप्टिमाइजेशन होगा क्वालिटी कंट्रोल हे करिवो ऑटोमेशन रे आप पोस्ट प्रोसेसिंग आपन मिनिमाइज हिसबो बहुत भलो डिजाइन आपन जोटा कि आपण से दैट सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से आपण यूज करै सो द प्रोसेस ऑफ अछि डिफाइन प्रॉब्लम सो इज नॉट अ टॉपिक तो ये प्रोग्राम रिसर्च टॉपिक पर चलछि CNN in additive manufacturing conversations fully from data training कलाजो data training कलाजो ऑटोमेटिक हाई आउटपुट डाटा मिले तो देखिए अपन एरर को मिनिमाइज करें तो ये कौन कौन से लागे ना इनपुट लेयर्स इमेज सेंसर लागो डाटा टेम्परेचर डाटा कैप्चर मशीन्स लागो लेजर पावर लागो कंप्यूटेशन लेयर्स लागो एक्सट्रैक्टिंग फीचर्स डिफेक्टिंग पार्ट्स सो देयर आर सम प्रोसेसेस हमने CNN यूज करके एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग रे अडॉप्ट करू तो बेनिफिट फ्रॉम ले हम जो पार्ट डिजाइन हुए जोटा अपन आउटपुट पाती सेटा आपनकर एरर फ्री था सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग एरर ई सब कांसेप्ट गुडा ये सुपरवाइजर लेवल रे आपण पाइबे ये प्रोसेस हम नॉर्मल डेटा यूज करे जोटा कि बेसिक हम कोन ऑप्टिमाइज करे पड़े डाटा सेट इन लेबे हम CNN यूज करके को ट्रेन करें so these are popular CNN architectures Linux Alfred Linux Linux you are editing this एटा तो एडवांटेज था कोई डिफेक्ट होला प्रोसेस कंटीन्यूएशन प्रोसेस से कोई डिलैमिनेशन होला कोई एरर होला सरा सब हेल्प करियो पैरामीटर ऑटो ऑप्टिमाइजेशन ऑटोमेटेड क्वालिटी असेसमेंट जो इज स्ट्रांग करता है सेट स्ट्रांग करियो सेट पैरामीटर्स चेंज करो तो ये द एडवांटेज ऑफ CNN नेम इज द रिसोर्स वर्ड्स दिस इज ऑल अबाउट दिस additive manufacturing in all sectors so any doubt you can discuss हाइब्रिड हमें नॉर्मल एडिटिव सॉफ्टवेयर के से तो ये पता हो तो हम भी तो ऑलरेडी मार्केट सोल्यूशन होची कि हमें यूज करछे ताको चैलेंज जोटा कि हमर नेक्स्ट यूज ऑटो ऑप्टिमाइजेशन ऑटो फॉस्ट डिटेक्शन ऑटो एरर which process सेटा डायरेक्ट मेटल लेजर सिंटरिंग DMLS प्रोसेस सेटा आपन केवल मेटल पाउडरिंग यूज करो तो मेटल अछि 20-25 टाइप रो मेटल अछि जोटा कि DMLS प्रोसेस यूज करे हमर CTTC रे अछि DMLS प्रोसेस चैनल पे देबी DMLS प्रोसेस हमर दीदा अछि जोटा SL S अछि और SLM अछि सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग और सिलेक्टिव लेजर वेल्डिंग सिंटरिंग रे कोन होय ना पाउडर छोटे छोटे बॉल আছে तो सिंटरिंग में सर्टेन टेम्परेचर से जगह लागी छै एडिटिव फीचर टिकट लागी छै मेल्टिंग में कोन गोटे फ्यूज है गोटे पूल होने देली मतलब मेल्ट करी पूरा गोटे पूल है तो से जॉइंट पूरा परफेक्टली मैं हमें एथिरे कोन को SLM यूज कर सिलेक्ट मेजर लेजर वेल्डिंग तो लेयर टू लेयर तो नहीं रफनेस আছে আমার কাছে মানে ভিতরে তো রফ সেটা বলবো
बाहर आसो ऊपर आसो ऊपर भी ऐसे नहीं लेयर साइड में हां साइड रे आसो ना आसो सेटा आपन प्रॉब्लम नहीं जितने बड़ा आसे जितने हाँ, बड़ा हाँ। सेटिंग हिट आउटर लेयर हां हां सेटा में मेजर ड्रॉबैक करके हमें यूज करू नहीं सेटा आपन मिनिमाइज कर पारे बहुत ऑप्शन अछि फर्स्ट ऑप्शन हला आपन जो मेटल आपनडा को प्रोसेस करेला एफडीएम धरिबा ना मेटल ऊपर एसएलएस के एसएलएम रे कोन हुए आपन कंट्रोल रहइबो आपन जब लेजर ता तापर पकेइबे केते कूल जीव बाहर को आपन कंट्रोल करिबे यदि लेजर सिंटरिंग हबो आपन किछटा कंट्रोल करिबे किंतु मेल्टिंग रे एक्स्ट्रा पोर्शन उडा ऐड हो जाय किंतु जदि आपन एफडीएम यूज करिबे फ्यूज डिफ्यूजन मॉडल सेते सेते बाहर को जाय किंतु स्ट्रक्चर ता केमति ना किंतु कोन डिपोजिशन हैला परे सेठी ଗୋଟେ कर्व बड़े कॉर बड़ा कि स्ट्रक्चर टा कॉर बड़ा स्ट्रक्चर जदि आपन आगे पोस्ट प्रोसेस था घसी सफा कर सेटा आपन देखि से जगह पे ही रहला ना जो काई जगह कर रहे ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମେଟେରିଆଲ ଦେଇଛେ ଆପଣଙ୍କର 5 mm ଦରକାର ମୁଁ 5 mm ରେ ହିଁ ପକେଇବି ସିଏ 5.5 ଆସିଲା ତା ପରନେ ତୁ ନେକ୍ସଟ ଲେୟର को जे जगह रे इंटरलाइनर आसीरो स्पेसिस होगा କୋଉଠି ଆସିଲା ବାହାର ନା ଭିତରେ पूरा ଲେୟର ଗୋଟେ ଲେୟର ଆଟାଚ ହେଇକି ରହିଲା ତା ଏଇଟା ଉପରେ ହଁ ସେଠି ହିଟ୍ ରେଟ୍ ଅଛି ମାନେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ନା ହଁ 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 ଗୋଟେ ଲେୟର ପରେ ଆଉ ଲେୟର ଅଛି ଆପଣ ଦେଖ ତାର ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟଲରାନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ନେଇଥିବେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ କୋଉଥିରେ डिपेंड कर ଯଦି ଆପଣ ବିନା ନେବେ ସାର ଅଲଗା କରୁଛନ୍ତି ସାର କହିବା ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର 5 mm ର କଷ୍ଟ ରିଗର ଅଛି 5 mm 5 mm ତ ସି ସବୁବେଳେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହବ 5 mm + 1 ବାହାର ଯାଉଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଘଷିକି ପଲିଶ କରି ବାହାର କରିବେ ସେଇଟା ତ ଆମେ ପୋଷ୍ଟ ଫିନିସିଂ ଅପରେସନ ସେଇଟା ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ ड्रॉबैक ହଁ ସେଇଟା ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଥିରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କାଷ୍ଟରେ କିନ୍ତୁ ସେପାରେଟ୍ ସେଇ କରିବେ କଥା ମୁଁ क्वेश्चन ଆସେ ତାକୁ କିଛି ଡେଭଲପ କରାଲା ସେ ସେଇଟା ସାର୍ CNN ରେ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମାଇଜ ହୁଏ ତଥାପି ଆମେ CNN ରେ ସେଇଟା ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଁ ସାର୍ ଆପଣ ଟିଭିରେ କମ ପାଇବେ ଯଦି ନହେଲେ ଏମିତି 4D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା ଯଦି 3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ର କିଛି ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ ସେଇଟା ଆଉ ସେଇଟା ସାର୍ ବେଶୀ ଇଫେକ୍ଟିଭ କେବେ ହବ ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟଟା ଇନକ୍ଲାଇନ୍ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ପିରାମିଡ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କରିବେ ଆପଣ ସେଟା ଷ୍ଟେୟାର ଷ୍ଟେପିଂ ଇଫେକ୍ଟ ପାଇବେ ଆପଣ ବହି ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ବହି ଉପରେ ରଖିଗଲେ ସିଧା ରହିଲେ ତ ରହିଯାଉଛି ମତେ ଟିକେ ଏମିତି ସ୍ଲାଇଡ୍ କରିଦେବେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ ବଢ଼ିବା ସେଇ କେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଲିସ୍ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଘଷିକି ହାତରେ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଲଗେଇବ ସେଇ କଥା କାହିଁକି କହିଲେ ନା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଭେରି କରିବ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଆପଣ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ରହିଲା ଭିତରର ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଥର ଲେଜରର ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆସେ ଏଫଡିଏମ୍ ରେ ଆସେ ଆପଣଙ୍କର ଲେୟରର ଯେଉଁ ୱିଡ୍ଥ जो डिपोजिट जोड़ा है राष्ट्र यूथ आसे आपण जेतिके दरकार से अनुसार से डिपोजिट नहीं चलछि हमें एक्स्ट्रा देलो का आपण बसी खाली बाय हैंड यूज कर पारे मशीन यूज कर स्ट्रेंथ रो भीतर मैटेरियल्स पर डिपेंड करे हमें भीतर स्ट्रक्चर को चेंज कर पारे गोटे पैटर्न आपण कहନ୍ତି भीतर ता जिगजैग रहइबो कि कलर रहइबो कि गोटे स्टैंड जेटा काटी बळे ठिया हो सेटा आपण डिपेंड करे सेटा आपण स्ट्रेंथ पर डिपेंड करे किंतु आउटर रो है स्ट्रेंथ को अफेक्ट करे नाही एवरी लेयर रे डिलेमिनेशन आसी ना that to control environment also madam environment कारण आपण जब एफडीएम यूज करछथि आपनकर मेटल टेम्परेचर अराउंड 220 प्लास्टिक ता 230 to 40 डिग्री रहउछि आपनकर एनवायरनमेंट टेम्परेचर ता अप्रोक्सीमेटली धरतो 30 तो 220 to 30 सडनली साइज प्रोजेक्ट करूछि हां नोजल रे ठीक आसिला हां 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 केते टाइम होछि हां एक्जेक्टली सेही जो हम कंट्रोल एनवायरनमेंट रहउ छोटा मेशिन एटा 42 सेही जो हमर जो बड़ मेशिन আছে स्ट्रैटेजिस जो बड़ मेशिन उडा আছে से माने टेम्परेचर 100 डिग्री मेंटेन 95 को 100 डिग्री मेंटेन करे तो सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर होबनी बेड टेम्परेचर मिनिमम 95 to 100 डिग्री सेल्सियस तास तो कंट्रोल एनवायरनमेंट रहला सो सडन ड्रॉप होबो जोटा कि आपण थर्मोरेसिस्टेंस स्पेस को डेवलप करबो ना इथे के डेवलप रेसिडुअल स्ट्रेस डेवलप जो हाई फाई मेशिन जोटा का स्ट्रैटेजिस हला डिजाइन टेक मेशिन जोटा सेते ए दिन जोटा लागू करे पे सो एनवायरनमेंट मेंटेन करो सो 95 to 100 डिग्री एनवायरनमेंट तो 180 to 100 आसो डायरेक्ट 180 to 22 डिग्री आसो से जे छोटा को अवॉइड करो लेकिन मेटल प्रिंटिंग रे आपनकर भीतर कोटे जो चैम्बर ता से माने वैक्यूम कर दे वैक्यूम काहे ना कारे किछि गैसेस आसी ट्रैप हे जिवो कि किछि रिएक्शन अलग मेटल की से जो पूरा कंट्रोल एनवायरनमेंट ओपन एनवायरनमेंट रे पोजीशन तो सोफिस्टिकेटेड डिसीजन ए घर उडा में कोला होछ घर उडा कोला
बाकी जो मेटल यूज होछि आगे Cement copper metal हाँ सेरामिक यूज करछे पॉलीकार्बोनेट यूज करछे पेटजी यूज करछे एबीएस प्लास्टिक यूज करछे बहुत प्रकार प्लास्टिक सब वेराइटीज ऑफ प्लास्टिक यूज करछे आउ कुछ सर Yes, sir. Sir, if we compare the 3D printing with the traditional manufacturing process, then the limitations of 3D printing lie in terms of durability or strength of कौन पे material. यूज करछे ज्वेलरी सेक्शन में घर तैयारी करि पारे पार्ट्स कंपोनेंट्स तैयारी ओ भी फील्ड रे हां तो तार जो लिमिटेशन ता रहउची कि ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल देन आपण जदि स्ट्रेंथ हिसाब रे जिबे कन्वेंशनल पार्ट्स नो डाउट स्ट्रेंथ अधिक दोछ अधिक स्ट्रेंथ दोछ किंतु मोर अधिक स्ट्रेंथ दरकार नै मो घरर कांथ सब दिन आसे हाथी माड हो मो छोटो कंटाडे बढिया अछि या जदि स्ट्रेंथ एते हाई रखि मोर लाभ नै मो सेठी 3D प्रिंटिंग कर परिबी गोटे लुहा बैग सपोज बैग गोटे बैग आपण किनु 10 केजी बैग 5 केजी बैग मु जानि छिटा बड़ बैग कैरी करे असुविधा मु गोटे बैग कस्टमाइज करी तयारी करबी हाथ रे घरे 5 केजी रो एडा बड़ बैग रे 5 केजी उठे गयो सो करिया आपण स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो आपण कम 3D प्रिंटेड जोटा कि सेते हाई थाए आपण जति एडिक्वेट दरकार आपनकर सेही अनुसार आपण तरे डिजाइन चेंज करबे अधिक आगे हमर कस्टम नहीं सेति कि न बस जति कि दरकार से सर सेटा गोटे लिमिटेशन हे होची हां लिमिटेशन सेटा लिमिटेशन Then तापर how- आउट बड़ लिमिटेशन आपण मार्क करिवे सब मेथड आपण यूज करी 3D प्रिंटिंग करि परिबा नाही मटेरियल सिलेक्शन भी आपण लिमिटेड प्लास्टिक 4-5 प्रकार प्लास्टिक सब प्लास्टिक यूज करि परिबे सी प्लास्टिक यूज करि परिबे जोटा सेटिक टेम्परेचर मेल्ट करिवो सेटा बहुत जिन लिमिटेशन अछि मेटल सब मेटल आपण स्टेनलेस स्टील पाउडर यूज करि परिबे किंतु टिके आउट जिन सब मिसै देबे से होबन से कोच मोर गोटिए प्रकार जिन दरकार वेराइटीज ऑफ मेटल आपण स्टील नै छिबे ताबे टाइटानियम मिसै देबे से होबन गोटा मेल्टिंग टेम्परेचर थिले आउट मेल्टिंग टेम्परेचर अलग से कर देबे आइसोट्रोपिक इफेक्ट एलॉय मटेरियल तो ही करियो नाइस अलॉय डिपेंड करे नियर बाय जदि अलॉय रहला तबे से आप यूज कर जदि वेरिएशन रहला से कर देबे या ऊपर आता काम होउची काम चलছে से नियर बाय जो टेम्परेचर मेल्टिंग टेम्परेचर पाखा पाखी रहउची ताकू यूज करू इवन कंपोजिट डिजाइन भी करछन सोने कंपोजिट स्ट्रक्चर भी तैयारी करछन कार्बन फाइबर यूज करू सर एप्लीकेशन में लेवल हो मेडिकल एप्लीकेशन सर पास में डेंटल एप्लीकेशन अछि पोस्टेड अछि सॉल्व के प्रोडक्ट जनरल जो प्लास्टिक सर्जन सब क्षेत्र इनपुट मटेरियल सिस्टम इनपुट मटेरियल ह्यूमन बॉडी का मटेरियल अंदर अवेलेबल अछि तो दैट की बॉडी से रिएक्शन करू तब हम यूज करू तो भीतर के सेल बायो ना आपण तो जेल देखला लिविंग सेल से बायो काम एप्लीकेशन में राष्ट्र आराम से grow your own organ. Architect will do it. Grow your own organ. सर एटा जो देखुଥିଲେ ସେଟା ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ କୋଉଟା? ଯୋଉ ଗୁଡା ଦେଖୁଥିଲେ ସାଧାରଣ ପିଲାମାନେ ସେଟା ହଉଛି already adopt ହେଇଗଲାଣି ହଁ ବଟ୍ ବାୟୋ ହିସାବରେ ଯେମିତି ଆମ ବଡି ସୁଟ୍ ହିସାବରେ ସେଇ ମେଟେରିଆଲ ସେଇ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ ନେଇକି ସେ ମେଟେରିଆଲ ସେ ଡେଭଲପ ସି ବଡ଼ ଅର୍ଗାନ ବି ତିଆରି କରୁଛି ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିକ ଆପଣଙ୍କର ଓନ୍ ଅର୍ଗାନ ଆପଣ କିଡନୀ ଖରାପ ହେଲେ ଆପଣ ନେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଏବେ ନୂଆ ରିସେଣ୍ଟ ଆଡଭାନ୍ସ କରୁଛି ମେଡିକାଲ ଯୋଉ ଛୋଟ ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି ନାନୋଡୋଲୋଜି ଆପଣଙ୍କର ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ ଜୋନ୍ ଅଛି ତାର ଆଉ ଗୋଟେ କୋର୍ସ ଅଛି ନେନୋଡୋଲୋଜି ନାନୋଡୋଲୋଜି ତ ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଖାଲି ଛୋଟ ପିଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସ୍କାନିଂରେ ଦେଖିଥିଲେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଆଉ ଗୋଡ଼ ହାତ ଆସିଲା ଇଏ ଆସିଲା ଯାହାର ଗ୍ରୋ ନ କରୁଛି ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ କିଛି ଆପଣ କରିବେ ଭଗବାନ ବର୍ଷା କିଛି ଚାର୍ଜ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ
से इंजेक्शन देके करी करू डेवलप करू मार के देखबे ना आपण छुआर लिवर डेवलप करू आपण छुआर गोड़ डेवलप करू से इंजेक्शन दो डेवलप करू डेवलप करू से छुआ को इंजेक्शन दे मां को इंजेक्शन देके से धीरे धीरे ग्रो प्रॉडक्ट आसी का कांसेप्ट है से ना हम किसी करी मैडम एग्जैक्टली गाइड द मेंटेन द कॉन्सर्न यूज की कुछ मेटेरियल मैडम प्लीज नॉट एक्सेप्टेड हियर ऑन द आईटी एड्रेस है व्हाट विलेज कॉन्ट्रैक्ट से वरना अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन लगी 3D प्रिंटिंग अंडर वाटर मार्च का काम चल So with this I conclude. Thank you, Professor Asmi. Thank you, sir. Very effective session. So now we will go for the IT break. Actually, about time table, but we will be back to it. No, sir. It's our mistake. I'm cosmetic outside in this room. We will be back within 12